High Court, exercise number 180 speed. Is the paddy purchased by a miller who sells the rice to the exporter not accessible to the levy of purchase tax? Stop. This is the primary question that arises for consideration in this bunch of 53 writ petitions. Stop. Civil writ petition number 4379 of 1999 involving this issue had been admitted by a bench of this court. Stop. It was on the daily board of this bench. Stop. The remaining 52 petitions were listed for preliminary hearing on July 31, 2001. Stop. Counsel for the parties made a request that all the petitions be heard and disposed of together. Stop. Consequently, we have heard these petitions. Stop. Learned counsel for the parties have referred to the facts in civil writ petition number 8532 of 2000. Stop. These may be briefly noticed. Stop. The petitioner has a sheller. Stop. It purchases paddy, processes it, and sells rice. Stop. Herein we are concerned with the sale of rice to an exporter who sold it to a foreign buyer. Stop. The petitioner claims that in view of the provisions of Article 286 of the Constitution and Section 5 and 15 of the Central Sales Tax Act 1956, hereinafter referred to as the 1956 Act, the state cannot levy purchase tax on the paddy purchased by it for sale of rice to the exporter. Stop. The petitioner filed sales tax returns for 4 assessment years with 1996-97 to 1999-2000 in accordance with the provisions of Section 25 of the Haryana General Sales Tax Act 1973, hereinafter referred to as the 1973 Act. Stop. It deposited the tax which fell due in accordance with the return. Stop. The petitioner claimed that no purchase tax was leviable on the paddy which was shelled to fulfill the contract of sale of rice by the exporter to the foreign buyer. Stop. This claim was made on the basis of the provisions of Section 15 and Section 5 of the Central Sales Tax Act. Stop. On August 16, 1999, the Sales Tax Tribunal accepted a similar claim made by a dealer from Sirsa, viz. Messrs. Virumal Monga and Sons in the matter of sales tax appeal number 698 of 1998-99. Stop. However, the state of Haryana filed a review petition under Section 41 of the Haryana General Sales Tax Act and claimed that the order was contrary to the provisions of law. Stop.
The plea of the state was accepted. Stop. Wide order dated May 15, 2000, the tribunal held that the assessee was not entitled to the exemption from the payment of purchase tax on paddy. Stop. In purchase to the order passed by the tribunal, the assessing authority issued notices to the petitioner to show cause as to why tax, interest, and penalty be not levied. Stop. Copies of the notices are at annexures P3 to P6 with the petition. Stop. The petitioner appears before the assessing authority. It produced the necessary form on record to show that the rice had been actually exported out of India by the exporter who had a prior order from the foreign buyer. Stop. If it claims that no tax was leviable. Stop. Thus, the question of charging interest or imposing penalty did not arise. Stop. Hi, student. डिक्टेशन लिखने के बाद उसको टाइप करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताते हैं। जैसे आप इसमें डिक्टेशन लिख लेते हैं तो इस विंडो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इस टाइप से विंडो नजर आएगी। इसमें विंडो के राइट साइड पे स्किप टू ट्रांसक्राइब वाली ऑप्शंस आपको नजर आ रही है, इस पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको लॉगिन वाला विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें लॉगिन नहीं करना है, साइन अप करना है। साइन अप पे जैसे क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट आ जाएगा। क्रिएट अकाउंट में आपने फुल नेम, ईमेल, ईमेल आप अपनी सही ईमेल डालिए, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद क्रिएट अकाउंट कर दीजिए। उसके बाद आपकी ईमेल पर वेरीफाई योर ईमेल उसका लिंक ओपन हो जाएगा। इस पे आप जाके क्लिक करें। क्लिक करते ही तो कंटिन्यू की ऑप्शन आ जाएगी। कंटिन्यू पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद लॉगिन वाली ऑप्शन आती है, इस पे साइन इन करना है आपको। साइन इन करने के बाद ट्रांसक्राइब हियर वाला विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे टाइमर है, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप टाइम से पहले टाइप कर लेते हैं तो नीचे ऑप्शन है सबमिट अटेम्प्ट, उस पर क्लिक करो, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको सबसे पहले एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कितनी एक्यूरेसी से आपने टाइप किया। नेक्स्ट विंडो है फुल मिस्टेक, कितनी मिस्टेक आपने की, हाफ मिस्टेक्स कितनी है, और एरर टोटल कितने हैं और कितने वर्ड आपने टाइप किए। और नीचे आपको ग्रीन में दिखा रहा है, ग्रीन ये जो करेक्ट वर्ड है, रेड वाला जो है आपकी मिस्टेक है। इसके बाद नीचे एरर ब्रेकडाउन वाली ऑप्शन आती है, इसमें आपको सारा डिक्टेशन के बारे में बता रहा है। ओमिट वर्ड्स, मिसिंग वर्ड्स, एडिट वर्ड्स, सब्स्टिट्यूट वर्ड, ये सब दिखाता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस है व्यू लीडर बोर्ड की। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको डिक्टेशंस योर परफॉर्मेंस की ऑप्शन दिखाता है। आपका कितना रैंक है और एक्यूरेसी कितनी है, ये जितने भी बच्चों ने इसको टाइप किया वो उनमें आपका रैंक डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद हमारे पास व्यू ट्रांसक्रिप्ट पीडीएफ की ऑप्शंस है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको विद शॉर्ट एंड मैटर जो डिक्टेशन का मैटर है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी आपने डिक्टेशन है इसमें अटेम्प्ट किए हैं उसका विद ग्राफ आपको डिस्प्ले करेगा। थैंक यू।